डायरेक्शन, ठीक है। ये इजी है, मुश्किल नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो बैंक वाले हैं ये कोडेड फॉर्म में भी आता है आजकल। इस बार जो IBPS PO मेंस में आया था वो कोडेड फॉर्म में आया था, बिल्कुल, ठीक है। बस कोड्स लिखा गया था, जैसे ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म में आता है, ये बहुत ही न्यू था, डिस्टेंस डायरेक्शन का कोडेड फॉर्म में आया था। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस तो पता होगा आप लोगों को। व्हाट इज द डिस्टेंस? एक जगह से जितना, मतलब उनका डिस्टेंस होता है, या फिर जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीज है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीज है, पता है ना। से A से लेके B, फिर B से लेके C, ठीक है। डिस्टेंस AB प्लस BC होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट EC होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप डिस्टेंस पूछा जाए आपको, तो आपको बस डिस्प्लेसमेंट ही बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। वैसे भी अगर कभी डिस्टेंस भी आ गया ना तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। डिस्टेंस पूछेगा तो फिर तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, मतलब अगर डिस्टेंस भी पूछा जाता है ना, आप ऑप्शन में देख ही पाओगे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। मतलब अब डिस्टेंस भी होता है, देख लेना, ऑप्शन में तो होगा ही, राइट। दोनों भी कर लेके देख लेना। हाँ, बट नहीं, नॉर्मली जितना अभी तक मैंने देखा है, कभी ऐसे डिस्टेंस ये प्लस प्लस वाला नहीं आया, हमेशा डिस्प्लेसमेंट आता है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेंशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? साउथ ईस्ट। ये है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब लेफ्ट एंड राइट बोला जाता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो नॉर्थ साइड, अगर इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपके राइट साइड कौन सा होगा? ओके, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, आपका राइट साइड कौन सा होगा? नॉर्थ। ओके, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, if you are moving to a west direction, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आपका राइट साइड क्लॉकवाइज भी होता है, क्लॉकवाइज राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। हो गया ना? लेकिन मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। तो लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा, ये ज्यादा इजियर होता है। शैडो आपका हमेशा पूरा दिन में सेम ही रहता है क्या? नहीं रहता है, राइट, अलग अलग होता है। अब दो टाइप का हो सकता है कि एक तो मॉर्निंग में, मॉर्निंग में सन किस साइड होगा? ओके, नाउ आप सपोज ईस्ट की ओर खड़े हुए हो, ठीक है, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, आपके शैडो कहाँ आएंगे? वेस्ट में, या फिर आपके बैक में, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट तो आपके शैडो आपके बैक या फिर वेस्ट में आएंगे। ओके,
मॉर्निंग में, तब शेडो कहाँ आएगा? फ्रंट में आएगा, मेरे फ्रंट में ही आएगा। अगर आई एम फेसिंग वेस्ट देन ओके, now suppose I am facing towards north direction, towards north, मेरी शेडो कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड में? लेफ्ट साइड में आएगा। मतलब हमेशा शेडो वेस्ट में ही होता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि नॉर्थ, बताती हूँ आपके लिए। ओके, साउथ की ओर हुआ तो राइट, टू माय राइट। ओके, तो बेसिकली आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि सपोज यू आर वॉकिंग, लेकिन आपको ये नहीं दिया गया है कौन से डायरेक्शन में आप वॉक कर रहे हो, लेकिन ऐसे आपको मेंशन किया गया है कि योर शैडो इज ऑन द लेफ्ट, दैट मीन्स आप कौन सी साइड वॉक कर रहे हो? नॉर्थ, ठीक है। या फिर आपका सपोज इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग योर शैडो, a person was walking, his shadow was on the right, साउथ डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सीधा ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि कौन से डायरेक्शन में उनका शैडो होगा, क्या होगा, ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन ये आएंगे जब आपके पूरा क्वेश्चन होगा, उसमें आपका डायरेक्शन नहीं होगा और आपको बोला जाएगा कि शैडो कौन सी साइड है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया मॉर्निंग का। अब इवनिंग में सन किस तरफ होगा? वेस्ट। तो यहाँ अगर इसकी ओर खड़े होंगे कोई तो अगर मैम शैडो बैक में आ रही है, शैडो बैक में आ रही है तो ईस्ट में जा रहा हूँ या वेस्ट में जा रहा हूँ? अगर मॉर्निंग में शैडो आपके बैक में है, देन आप किस साइड आओगे? ईस्ट में। वेस्ट में जाऊंगा फिर भी बैक में आप वेस्ट, मैं इस साइड, ईस्ट है, मैं इस साइड हूँ, तो यहाँ मेरे पीछे आएंगे ना, मैं फ्रंट वेस्ट साइड हूँ तो मेरे फ्रंट ही आएंगे शैडो, क्योंकि सन तो इधर ही है। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें ईस्ट की ओर अगर देख रहे होंगे आप तो कहाँ आएगा शैडो? फ्रंट में। एंड वेस्ट की ओर देन बैक। इसको आप रिमेम्बर कर सकते हो MNLSR, ठीक है। मतलब मॉर्निंग, नॉर्थ, लेफ्ट, साउथ, राइट, ठीक है। बाकी ये तो बहुत इजी है, ये ज्यादा रिमेम्बर करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता ही है, ये नहीं आते भी नहीं है, ज्यादा कॉमन भी नहीं है। एंड यहाँ पे इवनिंग एंड RSL। हो गया। एंड जब आप डायग्राम ड्रॉ करो तो जो डिस्टेंस बोला जाता है, जैसे सपोज एक डिस्टेंस बोला है 10 किलोमीटर, एक डिस्टेंस बोला है 5 किलोमीटर, अब 10 5 से छोटा होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं ड्रॉ करना, लेकिन वो थोड़ा रिलेटिव होना चाहिए कि ये छोटा होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो गया तो आपका डायग्राम ही गलत हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन लिख लीजिए। ए मैन left home left home and cycled 10 kilometers southwards, 10 kilometers southwards,
comma, turned right and cycle 5 kilometer, 5 kilometer, and turned right and cycled 10 kilometer, cycled 10 kilometer, and turned left and cycled 10 kilometer. Okay, how many kilometers will he have to cycle to reach his home street, हो गया सबका? Morning, north, left, south, right. Okay. हो गया? A man left home, cycled 10 kilometers southwards. Okay, ये उसका home है. Southwards, turned right and cycled 5 kilometers. Okay, and turned right and cycled 10 kilometers. Cycled 10 kilometers and turned left and cycled 10 kilometers. Okay, total यहाँ से सीधा उसके घर तक 15 kilometers हो गया. Okay. कौन सी direction में? In which direction is his home? Is he now from his home? In which direction? In which direction is he now from his home? ठीक है, तो कहाँ पे? West. ठीक है, starting point ये है, ये भी बहुत carefully देखना है कि कहाँ से कहाँ. अगर ऐसा होता in which direction is his home from from the position he is at now, ठीक है, तब होता east. Clear? Next question. Pankaj walks 15 kilometer, 15 kilometer in east. 15 kilometer in east. Then he turned to his right. Then he turned to his right. Now, in which direction? Is he from his starting point? South? Specifically बताना पड़ेगा. And distance?
अच्छा नहीं बोला गया है क्या? And then turns to his right. Then turns to his right and then again turns to his right. Okay. Now in which direction? ये distance बताओ मुझे. Distance बताओ. Pankaj walks 15 kilometers east, then he turns to his right and travels 10 kilometers. Then again नहीं and travels 10 kilometers, then again turns to his right. Then again turns to his right. Pankaj walks 15 kilometers in east, ठीक है? Then he turns to his right and travels 10 kilometers. Okay, then again turns to his right. Now, in which direction is this from his starting point? हाँ? हो सकता है. पंकज ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट है. पंकज was 15 kilometers in east. Then he turns to his right and travels 10 kilometers. Okay, then he turns to his right. मूवमेंट नहीं हुआ है, बस मूवमेंट नहीं हुआ है. he turned to his right and कितना चला क्या नहीं वो बस ऐसे था तो बस उसने राइट टर्न ले लिया बस. ठीक है. तो आप आपको पूछा गया है कौन से डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये होगा साउथ ईस्ट. ओके क्लियर. नेक्स्ट डिस्टेंस वही पाइथागोरस थ्योरम 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 325. ओके तो कुछ 28 के आसपास होगा. 18 सॉरी 325 सॉरी तो ये 324 तो 18 होता है. ठीक है 18 पॉइंट समथिंग होगा. approximately equal to 18. Okay, clear. Okay, now if आपको क्वेश्चन में पूछा जाता in which direction he forms with his starting point, which direction he forms with his starting point, not west. क्लियर है. मतलब आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा डायरेक्शन फॉर्म करेंगे विथ हिज स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, मतलब इसका मतलब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं. नॉर्थ वेस्ट. क्लियर. ओके नेक्स्ट Deepak walks 9 meter towards south. Deepak walks 9 meter towards south. Then he turns to his right. Then he turns to his right and move 5 meter. Move 5 meter. Then he turns to his right. Then he turns to his right and moves 4 meter. Then at last he turns to his left and moves 7 meter. Okay, देख लेना एक बार. Deepak walks 9 meter towards south. Then he turns to his right and moves 5 meter. Then he turns to his right and moves 4 meter. At last he turns to his left and moves 7 meter. Then how far is he from his starting point and in which
direction? Then how far is he from his starting point and in which direction? आ गया सबका? आ गया? distance 15 meter southeast, 15 meter southwest, 15 meter west, 15 meter northwest, and none of this. यही होता है जब ऑप्शन में नहीं होता है ना, तो फिर से दो बार करते हैं, गलत हो गया, मतलब जिस नहीं होता। Deepak works 9 meter towards south. Okay, meaning the starting point है. Then he turns to his right and moves 5 kilometers. Then he turns, sorry, 5 meter. Then he turns to his right and moves 4 meter. Okay, अब ये बड़ा नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है? Then at last he turns to his left and moves 7 meter. Okay, हो गया? अब आपको बताना है at which direction, then how far in which direction is he from his starting point. Starting point से कौन सी direction में? तो southwest. Clear? Southwest. अब आपको बताना है distance क्या है. Okay? भाई ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है? तो कितना हुआ ये? 7 + 5 12. एंड यहाँ पे ये अगर 4 है ये भी 4 होगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है? तो 12 square plus 5 square 144 plus 25 169 13 meters southwest. माना अगर 17 और 13 दोनों 17 और 13 दोनों कौन सा 7 तो है ही नहीं है, 17 में कैसे आएंगे? ऐसे 7 है तो ऊपर की डिस्टेंस 5 हो गई, तो उस साइड में ये खत्म हो गया, ये 5 है, ये 7 है और ये 5. मुझे नहीं समझ आ रहा. नहीं, ये आपको देखो, आपको यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन, आपको पूछा गया है which direction is he from the starting point. उसके starting point से कितने डिस्टेंस में है. जब left and moves 6 meter. And moves 15 far. एक से लेके 25 सबका स्क्वायर से याद रखना चाहिए.
सेंटीमीटर क्या है, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। Ansud walks 5 meters towards east, and then he turns to his right and moves 10 meters. Moves 10 meters, and then again turns to his right and moves 20 meters. Okay. Then again turns to his right and moves 25 meters. And finally he turns to his right and moves 7 meters. Okay. ओके, क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि टोटल 5 है, मतलब इसका मतलब ये टोटल इतना 15 है, ठीक है। तो ये 7 है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो बस डायरेक्शन तो वैसे ही पता चल ही गया होगा, क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ये 15 है, ये 7 है, तो ये 8 हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या होगा, ये 25 है, ये 10 है, तो 15 हो जाएगा। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर to 25 प्लस 64 to 89 जो होगा 17 मीटर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A man is facing south. A man is facing south. He turns. A man is facing south. He turns 135 degree in the anti-clockwise direction. In the anti-clockwise direction, and then 180 degree in the clockwise direction. 180 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing now? फिर 135 के बाद 135 के बाद 180 in the clockwise. ये साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट होगा। सपोज और एक मैं देती ऐसे कि इसके बाद ही man is facing south, he turns 135 degree in the anti-clockwise direction and 180 degree in the clockwise direction, again turns 135 degree in the anti-clockwise direction and 180 degree in the clockwise direction, तब क्या होता? ये तो समझ ही नहीं आया। मतलब फिर से ये जो he turns 135 degree anti-clockwise होता and 180 degree clockwise होता, फिर 135 and 180 है, वेस्ट हो जाता है, कितना होता? तो जब भी आपके एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हो, आपको ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले जितना भी एंटी क्लॉकवाइज है सभी को ऐड करना है, ठीक है। तो इस केस में एक ही था तो 135, अगर कुछ ज्यादा होता तो सभी को ऐड कर देते, ठीक है। जितना क्लॉकवाइज है सबको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना था 180, ठीक है। तो इनको माइनस करना है, माइनस मतलब डिफरेंस निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो क्लॉकवाइज बना है तो क्लॉकवाइज ही आएगा, कितना 45 डिग्री, तो साउथ से 45 डिग्री मूव करना है, ठीक है।
अगर फिर से सपोज और एक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता और एक 180 होता तो ये कितना होगा? ये हो गया 360, ये हो गया 135 प्लस 135 मतलब कितना 270 माइनस करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? ठीक है, तो जो भी करना है सभी एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करना है, सभी क्लॉकवाइज को ऐड करना है, फिर जो डिफरेंस निकलता है उसी का करना है। ठीक है, जो बड़ा है उसी साइड में जाएंगे। क्लॉकवाइज बड़ा है तो क्लॉकवाइज साइड में, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज के साइड में। नाइन्टी डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम साउथ। सपोज 90 ये साउथ है तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज ऐसे ही जाता है, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री तो वेस्ट। क्लियर? ओके, सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man is facing north. A man is facing north. He turns to 180 degree in the clockwise direction, 180 degree in the clockwise direction, and another 45 degree in the same direction, and then 270 degree in the anti-clockwise direction, in which direction is facing now? In which direction? North east। देखते हैं। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हो गया ये। आगे तो सभी क्लॉकवाइज को ऐड करना है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, and another 45 degree in the same direction, okay, and 270 degree in the anti-clockwise direction, ठीक है। ये हो गया 225, माइनस करना है तो कौन सा बड़ा है? एंटी-क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी-क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है। तो नॉर्थ था, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा था, एंटी-क्लॉकवाइज जाना है तो इस साइड, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। A man rides his bike from point N towards north and goes 20 kilometers straight, and then he takes 45 degree turn to his right, and goes 20 root 2 kilometer, okay, next। A man rides his
bike from point N towards north and goes 20 kilometers straight, and then he takes 45-degree turn to his right and goes 20 to 2 kilometer. हो गया सभी का? Okay. Then he takes 135 degree turn, 135 degree turn to his right, and goes 60 kilometer. He takes another 135 degree turn, to his right, and goes 20 route 2 kilometer. Okay, and reaches his starting point. The area inscribed inscribed by the path of rider ease. हो गया? हुआ? 400, 440, 800, 840, and none of this. 400 root 10. नहीं? डायग्राम दिखाओ सबका. आपका तो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे. डायग्राम नहीं बना. डायग्राम अनुज का सही है. A man rides his bike from point N towards north.
डिग्री टर्न टू हिज राइट। तो मैन देखिए, मैन यहाँ था तो 45 डिग्री टर्न मतलब ऐसे राइट में टर्न लेगा तो यहाँ, ओके, यहाँ 45 डिग्री टर्न टू हिज राइट एंड goes 20√2 kilometer. Okay, clear? Then he takes 135 degree turn to his right. यहाँ देखिए, या उनका मूवमेंट क्या था, यहाँ कुछ ऐसा था, ऐसे ही था, तो यहाँ से वो राइट टर्न लेंगे, मतलब क्लॉकवाइज आएंगे, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब आए तो ये कितना होगा 90, ठीक है, तो मतलब ऐसे आना पड़ेगा, फिर से 45 डिग्री आना पड़ेगा, क्लियर। तो ये 45 मतलब 135 डिग्री उनको आए, ठीक है, टुवर्ड्स राइट एंड मूव कितना 60 किलोमीटर एंड वो 60 किलोमीटर चले, ओके। देन he takes another 135 degree turn to his right, 135 डिग्री। अब देखिए ये यहाँ तक आएंगे तो 90 हो गया, राइट, और 45 डिग्री जाना है, मतलब ऐसा, ठीक है, एंड रीचेस हिज स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये आपको देख के रखा है कि ये कितना है 20√2 किलोमीटर, क्लियर, ओके। अब एरिया आपको बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। ये अगर 20 है तो ये भी टोटल कितना होगा, इतना सा 20 होगा, और बाकी जो, क्योंकि टोटल क्या है 60 है, बाकी कितना होगा, दोनों का सम 40 होगा, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है, एक साइड सेम है, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो एंगल्स है वो 45 है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेम ही होंगे, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, राइट। अब आपके पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट बाय 2, वो तो ट्रायंगल हो गया ना। पैरेललोग्राम का क्या होता है, sum of two parallels half into sum of two parallel sides into height. यही होता है, ठीक है। तो half into sum of two parallel sides, तो 80 मिल गया हमें, 20 + 60, क्लियर, मिल गया। अब हाइट मतलब ये होता है, ये निकालेंगे तो वैसे भी मिल गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये 20 है, ये 20√2 है, ये कितना होगा फिर 20, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये भी 20 ही होगा, क्लियर। तो इनटू 20, 800 मीटर था, किलोमीटर स्क्वायर। हो गया। हाँ, मैथ्स तो चाहिए होगा यहाँ पे, मैथ्स, रीजनिंग तो कुछ नहीं, रीजनिंग इज कॉमन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सबको समझ में आ गया, क्यों नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा, बस हमें हाइट चाहिए ना, तो हाइट तो सेम ही होगा, परपेंडिकुलर हाइट, एरिया इंस्क्राइब्ड बाय द राइटर, ठीक है। एरिया अब स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए तो कितना एरिया उनका हो गया, ठीक है, यही पूछा गया है। तो ये ट्रायंगल साइड नहीं होंगे, पूरा होना चाहिए, सब ट्रेपेजियम का एरिया जो उसने एनक्लोज किया वो तो पूरा ट्रेपेजियम। I'm saying parallelogram, sorry, trapezium. I'm sorry, man, saying parallelogram मुझसे गलती हो गया, it's trapezium, area of a trapezium, sorry. ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, हाँ, ट्रेपेजियम की फॉर्मूला है, मैं गलती से बोल रही हूँ, सॉरी। ओके,
हाफ हाफ भी कर सकते हो आप, डबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग मोहन एंड गौरव were standing opposite to each other. Mohan's shadow fell exactly on his left. Towards which direction is Gaurav facing? सबका आ गया? हो गया? सबका हो गया? आ गया? साउट आ गया? सबको समझ में आ गया? ओके। तो मॉर्निंग है, मोहन का शैडो जो है वो लेफ्ट की ओर है, राइट। तो लेफ्ट की ओर अगर है तो मोहन किस साइड फेस कर रहा है? नॉर्थ की ओर। तो वो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो साउथ ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इवनिंग when Suraj started walking from his house, his shadow was exactly towards his right. Okay, next. In an evening when Suraj started walking from his house, his shadow was exactly towards his right. He walked 6 kilometers. Then he turns to his left. And moved 4 kilometers. Again he turns to his एक बार देख लेना. In an evening when Suraj started walking from his house, his shadow was exactly towards his right. He walked 6 kilometers, then he turns to his left and moved 4 kilometers. यहाँ तक हो गया? Okay. Again he turns to his right and walks 6 kilometers. Again he turns towards his right and moves 6 kilometers. Then he turns to his right and move 13 kilometers. Okay. How far is he and in which direction from his starting point? Northeast. Northeast.
इवनिंग में राइट की ओर शैडो है, देन ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ की ओर कितने टाइम चले वो 6 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 4 किलोमीटर। ओके, and again he turns to his right and moves and walks 6 kilometer, then he turns to his right and move 13 kilometer। अब देखिए 13 ज्यादा बड़ा होना चाहिए यहाँ से। 13 kilometer, how far is he and in which direction from his starting point? ये इनके starting point है, तो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? एंड कितने डिस्टेंस है ये आपके 13, ये 4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये कितना होगा 9, ये 6 तो 12 हो गया। तो क्या होगा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 15 मीटर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? सभी को क्लियर है? कर पाओगे आप लोग? डिस्टेंस डिरेक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं होता।